Spiritual Guru Asaram Bapu shocked the country by holding the Delhi gang rape victim responsible for the attack on her. After the anger and outrage, did you think that he would tender an apology? Well, you couldn't have been more wrong, because after his blatant insensitivity yesterday, today, Asaram reacted to criticism with unbelievable arrogance. Take a look at this. दो को बोलती भैया मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो, भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। कुत्ता एक भौंका, फिर दूसरा कुत्ता भी भौंका और सभी पड़ोस के कुत्ते भौंकने लगे। अब हाथी उन कुत्तों के पीछे दौड़ेगा तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाएगी और हाथी का पद भूल जाएगा ना। मैं तो अपनी मौज में, मैं कायदून के पीछे दौड़ता हूँ। राजेंद्र मैं उनकी बात चुरा ली, अपने हृदय में फिट कर दिया हूँ। कोई मेरे लिए कुछ भी बोले तो बोलते जाओ, हम कायदून के पीछे दौड़ते। You heard that right? Asaram Bapu has brushed aside all criticism with a "I couldn't give a damn" attitude. For him, all the people who criticized him for preaching that the Delhi gang rape victim should have fallen at her rapist's feet and called them brothers are nothing more than dogs. Listen once more to the spiritual guru's arrogant snout. फिर दूसरा कुत्ता भी भौंका और सभी पड़ोस के कुत्ते भौंकने लगे। अब हाथी उन कुत्तों के पीछे दौड़ेगा तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाएगी और हाथी का पद भूल जाएगा ना। मैं तो अपनी मौज में, मैं कायदून के पीछे दौड़ता हूँ। राजेंद्र मैं उनकी बात चुरा ली, अपने हृदय में फिट कर दिया हूँ। कोई मेरे लिए कुछ भी बोले तो बोलते जाओ, हम कायदून के पीछे दौड़ते। The simple question we are asking is that as someone who is emulated by lakhs of his followers, can Asaram set such an example and be excused for it? He has, through his comments, insulted the memory of the Delhi gang rape victim and caused agony to her family. Can't he at least apologize to them for his thoughtless comments? Earlier in the day, we spoke to Shri Ravi Shankar, Asaram, we spoke to Shri Ravi Shankar, Sadhguru Jaggi Vasudev, and we spoke to Baba Ramdev, to get the sense of these three top spiritual gurus on Asaram Bapu's unbelievable arrogance. We've got three top spiritual gurus, men who have followed extensively across the country, joining us on the show. We've got Sadhguru Jaggi Vasudev, he's joining us from Coimbatore. We've got Shri Ravi Shankar joining us from near Cochin, and Baba Ramdev is joining us from Haridwar. I want to go across first to Sadhguru Jaggi Vasudev. Thank you very much, Jaggi Vasudev, for joining us on this show. You know, we just heard and played out the comments made by Asaram Bapu. You know, here's a man who's got Bapu taken from the Mahatma in his name. Do you even believe that such a man deserves to be called a spiritual guru at all? He's saying that the victim herself was responsible as much as the rapist. What do you make of the absolutely atrocious comments being made by this so-called Godman? No, I do not know all the details of what he's spoken because I have not seen the speech completely. But one thing that he said was, if these boys were initiated into some spiritual process, they would have been rapists, which is something we have to look at. Definitely in the process of growing up, something more profound than the body needs to happen to every youth. When that happens, the possibility of people going like this will be considerably lower, that's for sure. You know, about the girl begging is ridiculous. Sadhguru, we spoke earlier to the father of this young girl. He's very angry with the comment that Asaram Bapu has made. You know, he wants Asaram Bapu to come out and apologize. He says this man doesn't deserve to be a godman in the first place. Do you think Asaram should come out and apologize to the father for having hurt his sentiments and also those of every right-thinking person who's watching this broadcast? Definitely, if I never met this man, I do not know except for reading something in the media or whatever. If you can arrange it, I'm wanting to speak to him. I do not know how to get in touch with him, but if it's necessary, I'm willing to and wanting to speak to him and make it clear that what he has said, I don't know with what intention he said. I believe that he did not say this with the intention of hurting the parents or the family, but I think somewhere he got lost in his articulation and said something
which is completely irrelevant to the situation and very painful. No, you're saying that in the articulation he got lost. I beg to differ, Sadhguru. I believe that these were conscious comments made by Asaram, because even subsequently when he was asked about it, there's been no retraction, there's been no apology. In the aftermath of the Delhi gang rape, we've seen some absurd comments being made where people are blaming westernization, they're blaming declining moral values in India as a society. You know, somewhere in this entire narrative, people are suggesting that, you know, women are to blame, or they're finding reasons for why rape happened instead of focusing on the main problem, which is men and their deviant behavior, and the need to rectify that in the first place. See, what the family would have gone through with an incident like this is not something that anybody can ever understand, or at any time anybody can articulate the pain and what is involved in this. This is too much. And at such a time, there is no need to rub it in, apologies, this, that is not the point. The point is just this: please do not derail the discourse. It must be kept on, and it's very, very important. It is not about politicians, it's not about some leaders, it is not about religious people, it's not about somebody else. It is about women who are over 50% of our population. It's about our mothers, sisters and wives. It is about them, people that we care for, people who care for us. Without their care and concern, we wouldn't be who we are. And how we conduct that in this country, how we look at that in this country has to change. And this is a moment that we should not miss by focusing our attention on somebody else and somebody else. Man who's got millions of followers, Sadhguru, I want to know what action should be taken against Asaram Bapu. How can these sick and perverted mindsets be changed? Because if here are thought leaders who are going about making such atrocious comments, that's what their followers pick up, that's what trickles down later in society. The key challenge here is to be able to work together and change these perverted mindsets. I do not know, I'm not an expert on this, I do not know if there are laws to fix such talk. Because such talk is happening on all levels, about all issues, about just about anybody. You look at the internet, you look at the blogs that are happening, anybody can say anything against anybody and get away in this country, or just about anywhere right now. So I do not know if there is a law that can fix such a thing. But socially, morally, we must fix this thing. Now the media has focus on him, and I think it's best either he comes out and clarifies what he intended to say and goofed up, or definitely apologize, well, even if it's a goof. I'm glad that you've come out, Sadhguru, and demanded an unequivocal apology from Asaram Bapu. I want to go across now to Shri Ravi Shankar, who's joining us on this broadcast as well. Thank you very much, Shri, for joining us in Center Stage this evening. We've just heard Asaram Bapu make some absolutely ridiculous comments. You know, here's a person who pretends to be a spiritual guru despite his dubious track record. He's come out and made these ridiculous statements. You know, what do you make of the sort of comments that Asaram Bapu has been making, sir? I mean, it's so unfortunate that he could say such things, and I mean, nobody could agree with this sort of comments. The girl's father, Shri, is demanding that Asaram Bapu come out and apologize. Everyone's aghast with the fact that a so-called man of God is making such comments. Do you think Asaram Bapu should come out and apologize to the family, to the people, say that I'm sorry, I made a mistake? Because so far all we've seen from him is defiance. Here's a man who's clearly not apologetic, Shishi. I mean, you know, when we make a mistake, it is really gentlemanly thing, gesture to ask for apology. If a mistake has happened by slip of the tongue or whatever means, it's only wise to say, if I'm sorry if I have hurt by my words. You know, if it has hurt the sentiments intentionally or unintentionally, that is the, I think, is the right attitude. No, but Shishi, you're giving him the benefit of doubt by suggesting it could have happened unintentionally, but it wasn't a slip of the tongue. Not just did he say it in the first place, his supporters came out and argued it, then he's come out and reiterated it. He said, mad dogs keep barking. There is no sense of reflection, no sense of remorse. There's a very perverted mindset, and this very clearly, Shishi, is not a slip of the tongue. Yeah. I mean, you know, Rahul, I don't like to even comment on such statements. You know, where for every foolish statement, we cannot go on commenting on them. It is so foolish, it's so obvious.
So it's better we move on with something better to do and see how we can, improve the safety and security of women in the society rather than sitting on such statements, which is obviously useless. Obviously, so obvious. But Shri, over the last few days, we are seeing one by one so many foolish comments being made by various sorts of people. And it's not just people from the VHP, the RSS, people from Muslim organizations, spiritual gurus, politicians, MPs, ministers, all of them coming out and saying absolutely absurd things. Very clearly, beneath the veneer of civility, there seems to be still very, very medieval sexist mindsets. How do we change that, Shri? I can't but agree with you, Rahul. You are correct, and we need to correct this tendency in our society. We need to see that people are valuing human life, and people should volunteer to help all those in distress. Women and children's safety is utmost important in our society, especially in big cities. So volunteers should come now forward and instead of really wasting time on commenting on comments which are no good, we have to get on to work on the streets, on the communities and on mohallas. Neighborhood watch is essential, and also we need to identify these people who have violent tendencies, who can be a potential danger to the society, and start correcting them. It can be due to hormonal imbalance, it can be due to a bad family background, or could be many other things. So we need to go into the detail why these people commit crime, and I'm more interested in bringing reform into those sorts of mindsets than wasting our time on who said what. But what are the solutions you could lay out, Shri? Because very clearly, just in a city like Delhi itself, this year there have been 635 rapes with just one conviction so far. In a society like India, which is clearly urbanizing, where there is this big rift between the haves and the have-nots, what according to you needs to be done to ensure that women feel more safe and secure? That's what I was saying. There's a counseling is needed for anybody who has even the slightest of those tendencies. Number one. Second, nourishment of human values. Encourage people to be on more spiritual and humane approach to life. People have values, family values, and spiritual values. They won't engage themselves in heinous crimes. Shri Ravi Shankar, for joining us in very difficult circumstances. You're on a boat at this time. Thank you very much. Really appreciate you joining us with your words of wisdom. I want to go across to Haridwar. Baba Ramdev is now joining us on this broadcast. Swamiji, swagat hai aapka. Thank you very much for joining us on Center Stage this evening. We've seen Asaram Bapu come out and make absolutely atrocious comments. There's a lot of anger against him. People are saying that Asaram Bapu doesn't deserve to be called a godman, that he should come out and apologize. आपको लगता है कि इस तरह का बयान जो आदमी देता है, जो अपने आप को धर्मगुरु कहलाता है, क्या उसको धर्मगुरु कहलाने की इजाजत है? क्या वो वाकई में धर्मगुरु कहला सकता है? क्या शोभा देती है इस तरह की बात एक ऐसे आदमी को जो अपने आप को स्वामी कहता है? प्रश्न है, इसके ऊपर तो मैं कोई बयान देके कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो काम में, क्रोध में और लोभ में अंधे होते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, और ऐसे लोगों से कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती, और ऐसी प्रवृत्ति समाज की बढ़ रही है। ये जो बलात्कार के केस हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार रोज देश में बढ़ रहा है, और जो आदमी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, इसका कारण यही है कि तीनों चीजें बढ़ रही हैं, और तीनों को कंट्रोल करने का एक ही माध्यम है कि व्यक्ति योग करे, मेडिटेशन करे, और वो जो है रिश्तों की पवित्रता को समझे, जीवन की पवित्रता को समझे। और जब तक ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक
हम किसी बड़े बदलाव के बारे में नहीं सोच सकते। स्वामी जी, जहां तक बापू ने कहा है उसके बारे में उन्होंने किस संदर्भ में कहा है और उनका उद्देश्य क्या था, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना। नहीं, संदर्भ क्या होता है? What is context got to do with this, Swami ji? You know, here's a man who's come out and said, let barking dogs bark, that the girl should have fallen on the feet of her rapist. They would have then thought of her as their sister and wouldn't have raped her. Do you not think that Asaram Bapu owes the nation an apology? I want you to be direct, I want you to be straight. Do you not think this man needs to come around and apologize for the sort of atrocious comments he's made, Swami ji? देखिए, तो बापू जी को खुद डिसाइड करना है कि उनको क्या करना चाहिए। किस तरह से उनके मुख से ऐसा निकल गया, क्योंकि वो तो चरित्र निर्माण की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, नशा छोड़ने की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन जीने की बात करते हैं और हमेशा ऊंचे मूल्यों की बात करते हैं। इस तरह की उनसे कैसे असावधानी हो गई, मैं भी इसके बारे में सोच नहीं पा रहा हूं। Swami ji, I don't understand why you're appearing to be so soft on Asaram Bapu. You know, here's इनकी जबान से फिसला विसला कुछ नहीं, Swami ji. You know, he came out and said it, he's reiterated it, he's stuck by his comments. People from his ashram have been coming on our show, they've been brazening it out completely. Here's a man who's, that's what he thinks. There is no question about this being a slip of the tongue. आप कह रहे हैं कि फिसल गया उनकी जुबान से. There's clearly something very wrong in the way this man thinks and that needs to be addressed. Why are you so soft? आप इतने soft क्यों नजर आ रहे हैं आसाराम पर? राहुल भाई, आपको पता है मैं हमेशा खरी खरी बात कहता हूं। कहां खरी बात? मेरे जीवन का एक मैंने व्रत ले रखा है कि मीडिया और साधु इस दो के बारे में टिप्पणी नहीं करना। तो ये मैंने एक संकल्प लिया हुआ है। आप जो है इससे मुझे आप मेहरबानी करके कम से कम मुझे अपनी मर्यादा में रहने दीजिए। इसलिए मैंने, क्योंकि बहुत चारों तरफ जंग छेड़ी हुई है, इसलिए मैं इस बारे में कोई विशेष बयान नहीं देना चाहता। No, but I mean that's the position that you're taking for this show. But the fact is, when someone like you seems to allow these comments to pass by giving the benefit of the doubt to a rabble rouser like Asaram Bapu, you know, it really makes me wonder. Why is it that you're not coming out? Because it's not just Asaram Bapu, and he's not an isolated case, Swamiji. Ever since this happened, we've seen all manner of people come out and suggest that rapes keval इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं होते, that marriage is a social contract, that लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, पति के लिए खाना बनाना चाहिए, अगर वो खाना बनाती हैं तो उनका कुछ नहीं होगा, पति बाहर जाएगा काम करेगा। You know, it makes me wonder which world are these people living in. लगता ही नहीं कि जिस तरीके से जमाना बदल रहा है, युग बदल रहा है, इतने सीनियर लोग हैं, अभी वो इतनी बेतुकी बातें कर रहे हैं। स्वामी जी, जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है और इसमें बहुत गंभीरता के साथ में बोलने की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, हम भावुकता में, भावावेश में, हम भी खुद जो है, जो पश्चिमी संस्कृति है उसका के प्रखर विरोधी हैं। लेकिन ये जो पूरा वाकया है, अब इसमें जो है चीजें जिस तरह से सामने आ रही हैं उससे सुनकर के अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें चरित्र निर्माण करना ही पड़ेगा। यदि हम बलात्कार को रोकना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, तो उसमें हमें 3 दिशाओं से प्रयास करना पड़ेगा। एक सोसाइटी की ओर से, समाज की ओर से, एक सरकार की ओर से कानून ऐसा बने कि जिससे कि खोप हो ऐसे जो है घिनौने कृत्य करने वाले लोगों की मनों में। और तीसरा, हमें अपने परिवार को भी देखना पड़ेगा, इंडिविजुअल से लेकर के हमारी फैमिली तक, क्योंकि जो है यदि कोई माता पिता बहुत जागरूक हैं और व्यक्ति खुद बहुत जागरूक है तो अपने आप इन चीजों पर कंट्रोल पा सकता है। अब जैसे बेटी वाला मामला हुआ तो इसमें जो है, क्योंकि अब इसमें बेटी के माँ बाप के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बेटी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन बेटों ने किया वो भी तो किसी घर के बेटे थे, तो उन बेटों की और उनके माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए परिवार, समाज और सरकार, तीनों तरफ से हमें चीजों को जो है संभालना पड़ेगा। और जिस तरह से जो है हमारे यहां पर भोग को प्रेजेंट किया जाता है ग्लैमर के साथ, चाहे वो विज्ञापनों की दुनिया हो, चाहे तमाम तरह के रैप आदि के केस हो, वो फिल्मों के अंदर और तमाम तरह के
जितने भी ये डिफरेंट प्रकार के सीरियल्स बनाए जाते हैं, उन सब में ग्लैमर के साथ इन चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो लोगों को लगता है कि यही असली जिंदगी है। तो मुझे लगता है कई दिशाओं से हमें परिवर्तन करने की जरूरत है। No, but Swami ji, in the manner in which you're speaking, from what I can gather very clearly, you too believe that westernization at some level is to blame. But what I'm trying to ask you, sir, is that, we need to realize that there's a different generation of women that's being brought up, very different from their mothers, their grandmothers, women who've gone out and studied at the best of schools and colleges. They want to go out and work. They want to go and wear the clothes they want, stay out till when they want, and all they seek is safety and security. Why is it that all the Lakshman Rekhas that are drawn, Swamiji, are always drawn for women? Why is it that, you don't counsel men, for example? आपको लड़कों को बोलना चाहिए कि आप अपनी मर्यादा में रहो। हर बार जब आप मर्यादा की बात करते हैं, हमेशा वो जो लकीर खींची जाती है, लक्ष्मण रेखा जो होती है, वो हमेशा लड़कियों पर लागू क्यों होती है, स्वामी जी? नहीं, मैंने तो लड़कियों के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोला है। और जहां तक राहुल भाई वस्त्रों का प्रश्न है, मैं तो कई महीनों तक अमेरिका में रहा हूं, और अभी तक जो मेरी ब्रिटेन से लेकर के यूरोप तक की जो अलग अलग देशों में यात्राएं हुई हैं, मैंने तो वहां देखा, वहां तो कोई नंगा नहीं रहता है। वहां इतनी ठंड होती है कि कोई नंगा रह ही नहीं सकता। तो ये नग्नता का नाम पश्चिम की संस्कृति हम नहीं कह सकते। यूरोप में भी लोग सभ्य तरीके से रहते हैं। तो वस्त्र और जो है विचार और इसके साथ जुड़ा हुआ कैरेक्टर, तो वस्त्र जो है वो ऐसे हो कि जिससे आदमी सभ्य लगे, क्योंकि यूके, यूएसए, कनाडा, पूरा जो है यूरोप, वो 99.99% लोग वहां पर पूरे वस्त्र पहनते हैं। No, but Swamiji, this has got nothing to do with whether people are wearing clothes or not wearing clothes. I mean, even if, for example, a young girl wants to go out wearing a dress that she's chosen, she should feel safe wearing that. Why is it that just because she's wearing a dress, she's more unsafe than someone else? आप कह रहे हैं कि सभ्य बनकर रहना चाहिए. At the end of the day, it's important to have men behave themselves as opposed to, ensure that women live their lives codified by certain strictures or certain limitations that you or anybody else think acceptable. आपके हिसाब से solutions क्या हैं? हमने बात की प्रॉब्लम की, आपके हिसाब से अगर हमें रेप्स की संख्या रोकनी है, महिलाओं को और सुरक्षित महसूस करना है, आपके हिसाब से सॉल्यूशंस क्या हैं स्वामी जी? देखिए, जो हवस पैदा होती है व्यक्ति के भीतर, इसमें जो हमारे भीतर के ब्रेन केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, भीतर के सॉल्ट्स हैं, पूरा जो हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है हमारा पूरा, वो बहुत वर्क करता है। तो यदि व्यक्ति जो है योगाभ्यास करता है, प्राणायाम करता है, मेडिटेशन करता है, तो निश्चित रूप से उसकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा और उसके केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस ऐसा होगा कि वो इस तरह के जो है पाप, कुकर्म, अधर्म, बलात्कार जैसे चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस तरह से हमने अपने पाठ्यक्रमों में सेक्स एजुकेशन लागू किया, उसका एक पक्ष सही है कि उससे जो HIV जैसी बीमारियां हैं या शरीर में होने वाले जो शारीरिक और भावनात्मक जो परिवर्तन हैं, उनके बारे में जहां व्यक्ति को जागरूकता मिलती है, तो इसको सही दिशा, राइट डायरेक्शन जो है वो सेक्स एजुकेशन से नहीं, वो योग एजुकेशन से मिलेगा। इसलिए जो है शरीर में जो रूपांतरण होते हैं उसको हम सही दिशा में कैसे लेकर के जाएं, इसके लिए योग बहुत जरूरी है। और उसके लिए घर में, परिवार में, समाज में एक ऐसा वातावरण बनाना कि जिससे कि लोग जो अपने मूल्यों, आदर्शों को, सदाचार को सबसे ऊपर रखें। नहीं, आप योगा एडवोकेट कर रहे हैं स्वामी जी, but the fact is very clearly over here, we need to educate men to behave themselves. Yoga is fine and no one's taking away from the importance that yoga can play, but this is about reaching out, sensitizing men, making them understand and appreciate that women need to feel secure. That is the key focus. उस पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इस लड़कों को बताना चाहिए कि वो तमीज से पेश आए ना, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन के बजाय योगा पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। The balance needs to be understood and defined very clearly, स्वामी जी। देखिए राहुल भाई, बात यह है वो लड़का है या लड़कियां हैं, इस मामले में ज्यादातर लड़के दोषी होते हैं, लेकिन कई बार गलतियां लड़कियों की ओर से भी होती है। इसलिए दोनों के ही कैरेक्टर के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, इसमें कोई आग्रह नहीं रखना चाहिए। माना कि 90% लड़कियों से गलतियां होती हैं, लड़कों से गलतियां होती हैं, लेकिन लड़कियां भी 10% इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं।
और कई बार जो है चीजें पहले जो है वो एक तरह से सेक्स डिजायर के रूप में चीजें चलती हैं, लेकिन वो फिर गलत लाइन भी ले लेती हैं। इसलिए प्रशिक्षित करने की दोनों को जरूरत है। और उसमें मैंने कहा ना कि राइट डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट डायरेक्शन के कई पहलू हैं। एक तो जो है शारीरिक और जो भावनात्मक जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में बताना, फिर जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनके बारे में भी लोगों को बताना, फिर उनकी पूर्ति का क्या साधन है। माना कि सेक्स चाहिए युवकों को, युवतियों को, लेकिन उसका तरीका क्या है। पैसा चाहिए, लेकिन पैसे का तरीका क्या है। ऐसा थोड़ी कि चोरी जारी करके, डकैती डाल करके और जेब काट करके, कोई भी गलत काम करके आपको पैसा अर्जित करना। माना कि भूख आदमी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को आप गलत तरीके से तो नहीं कि कोई किसी का रेडी वाले के फल रखे उसमें उठा करके भाग गए, कहीं पर कुछ भी रखा उसको चोर करके भाग गए। तो ये जो है बहुत संयम, ध्यान और बहुत ज्यादा यदि आपके मेंटल स्टेज बहुत ऊंची है तो आप इन चीजों से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लोगों के अंदर सेक्सुअल डिजायर होंगी, लेकिन उसकी दिशा ठीक होनी चाहिए। और इसके लिए जो है बचपन से लेकर के और युवाओं तक, कोई तो 50-60 साल के बुजुर्ग जो हैं वो छोटी छोटी बेटियों के साथ मुंह काला करते हैं। इसमें उम्र का भी लिमिटेशन नहीं है, सबको इसमें प्रशिक्षित करने की जरूरत है। और उसमें जहां पर जो है स्पिरिचुअल काउंसलिंग की जरूरत है, कैरेक्टर बेस्ड काउंसलिंग की जरूरत है, वहीं पर जो है योग और मेडिटेशन इनकी बहुत बड़ी भूमिका है व्यक्ति के भीतर जो भावनात्मक परिवर्तन है उसके लिए। Well, you've been very guarded. You haven't, unlike Shri Ravi Shankar and Sadhguru Jaggi Vasudev, you haven't attacked Asaram Bapu for what he said. But that's your point of view and we leave it over there. Swami Ramdev, for joining us from Haridwar, thank you very much.